Welcome to another episode of The Brand Called You, a podcast and podcast show that brings you leadership lessons, knowledge, experience, and wisdom from thousands of successful individuals from around the world. I'm your host, Ashutosh Garg, and today I'm privileged to welcome a very accomplished and respected parliamentarian from India, a senior former corporate leader, and a social sector leader from Deoria, India, Mr. Shashank Mani. Shashankji, welcome to the show. Thank you very much, Ashutosh. Shashankji is the Member of Parliament from India, from the Deoria UP constituency. He's the founder of the Jagriti movement, and he's an author of a book titled India, A Journey Through a Healing Civilization, and Middle of Diamond India, National Renaissance Through Participation and Enterprise. So my first question to you, and I'm sure you've been asked this many, many times, what inspired your decision to transition from a very successful corporate career to politics? Firstly, I think I have been socially involved with public life for many years. 17 years back, I started the Jagriti movement, which was consisting of Jagriti Yatra and latterly Jagriti Enterprise Center, which happens to be my own home district. And therefore, I felt that as I was moving into the Vanaprastha state of my life, I should do something for the country. Yes. Okay. And public life is something that I feel is immensely gratifying. It's also immensely challenging. इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं वानप्रस्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ तो क्यों न क्यों देश की सेवा करा जाए, और मैंने 15 अगस्त 2022 को इस्तीफा दिया। और उसी दिन, क्योंकि 75वीं हमारी वर्षगांठ थी, तो अगले 25 साल के लिए, अमृत काल के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक स्वप्न दिखाया है, एक हमें मिशन मोड में लाए हैं, उस मिशन में लग गया। और उसी के 2 साल बाद मुझे टिकट मिला, मैं कंटेस्ट किया और भगवान की कृपा से मैं जीत गया। सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ this desire to do something for the country, as I thought the third stage of my life was evident. Amazing, amazing. You certainly don't look like someone who's reached the वानप्रस्थ stage, but चलिए आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं. But आप ये बताइए कि जब when you started uh, your life as a corporate leader and then entered grassroots politics, इसमें आपके क्या-क्या challenges थे? दो तीन challenges हैं. एक challenge ये है कि one must have a thick skin in politics, right? Because politics by nature has an opposition, and therefore people will criticize you. चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, तो उससे बहुत विचलित नहीं होने की जरूरत है. अपना काम करो और कुछ हद तक गीता का उपदेश पालन करो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना काम करिए. कुछ लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, कुछ लोग आपका प्रशंसा करेंगे, दोनों को एक तरह से ही लेना है कुछ हद तक. One has to be very stable and focused in politics, far more focused than in corporate life, because in corporate life you have the sanrakshan, the protection of a corporate environment. Whereas here there are so many forces at play, political, social, economic, that you have to be very focused. So that's one thing. I think the second thing is that यहाँ पर more than economic activity, dignity matters a lot. So how you are parlaying with your citizens, your citizens as well as your voters, कैसे उनसे आप बर्ताव करते हैं, नम्रता से करते हैं, सरलता से करते हैं, उनकी इज्जत, उनके सम्मान की भावना करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. और तीसरा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे जनपद में, मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं डेवलपमेंट भी लाऊं, पॉलिटिक्स भी लाऊं. सो आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क from the very beginning, so that when we go forward, it is politics of development, and that is not easy. Actually, politics itself is a full-time job. Correct. उसके ऊपर आप डेवलपमेंट लाए, इसीलिए मैंने संस्था खड़ी करी, क्योंकि संस्थागत रूप से अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट कर पाऊंगा. अन्यथा इतना ज्यादा लोड होता है किसी सांसद पे कि आज की तारीख में 2 मिलियन वोटर्स हैं हमारे, but 2.5 million citizens हैं. It's almost impossible to cope with politics or development unless you also have a development. So those are three thoughts which I kind of say in answer to you. And very, very powerful thoughts, I must say. I agree with you. But the other challenge is that, not only are you a politician, but you also have a passion for social and entrepreneurial initiatives. And I've been following you on LinkedIn, and you're doing a lot of work in the area. How do you navigate balancing politics and social and entrepreneurial initiatives? So the genesis of that are the same. The genesis is that we need to create forces which enable. मैंने जब अपनी सोशल सेक्टर में भी काम किया, तो हमने क्या किया, हमने लीडर्स खड़ा किए. हमने वो काम नहीं किया. अब वो लीडर्स जाके एक अच्छा अस्पताल खड़ा करे, या अच्छा स्कूल खड़ा करे, या अच्छा सैनिटेशन करे, या उद्यमिता से करे, सोशल एंटरप्राइज से करे. और लगभग वही मेरी पॉलिटिक्स भी है. मेरा ये कहना है कि सबके प्रयास से सबका विकास होगा. मेरे जो 2 मिलियन वोटर्स हैं और 2.5 मिलियन लोग हैं, अगर उनका प्रयास नहीं होगा तो उनको मुझे इनेबल करना है.
और जो मेरा बड़ा प्रिय छंद है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि जामवंत का रोल हमें किरदार करना पड़ेगा। कहाँ रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। I believe that our citizens, our voters, have got all the powers, and for the longest time we have patronized them. And since the emergence of Prime Minister Modi, we have suddenly found that we have believing in our people. We are making them feel like Hanuman, and they can do something for the country. So I think the genesis of my social work and my political work is the same stream, if I may call it that. And of course, sometimes it's very difficult to keep the two streams going, which is why an institution is needed. But I think that's the way I would like to emerge in politics and do more in this area. Wonderful. So you started the Jagriti movement, and within Jagriti movement, you have the Jagriti Yatra and the Jagriti Enterprise Center. Tell me a little bit about the Jagriti movement and what was the motivation to launch the Jagriti Yatra? So many things, आशुतोष जी, are very personal. मैं बचपन से ही बहुत घुमक्कड़ रहा, मैं घूमता था। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, तो उसके वजह से थोड़ा सा हम लोग पूरे देश का भ्रमण करते थे। लेकिन बचपन से ही मेरी मदर मुझसे बोलती थी, तो हर समय निकल जाते हो कहीं घूमने के लिए। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने सोचा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने नवयुवकों को देश का भ्रमण कराना चाहिए। देयर इज नो बेटर क्लासरूम देन द नेशन इटसेल्फ. And I am from an IIT, and I regret the time that for 4 years when I was a BTech in IIT Delhi, we were largely confined to our 200-acre campus. Right. I wish I had explored the country more, but from the very beginning I had that view. So I decided back in 1997, I was actually at that time working for a consulting firm. I took a leave of absence and organized the first train journey, which is called the Azad Bharat Rail Yatra, which is the basis of my first book, India Journey Through Legalization. जो वो किताब निकली 2007 में, तो लोगों ने रियलाइज किया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरी ट्रेन में हम लोग 15-18 दिन घूम सकते हैं। तो उसको फिर रिवाइव किया, और उस समय हम लोग उद्यमिता के माध्यम से आगे बढ़े. So then we took on this mandate of saying that how do we create in tier 2, tier 3 districts, and I'll talk a bit more about middle of diamond India. How do we create that energy, that enablement, where we can create leaders who can then take the nation forward in their own sense. So I would say that it started off in a personal fatur. It translated into something which happened many years back, and then has got institutionalized through the efforts of many young leaders like Ashutosh, who's also from IIT Kharagpur. He's our CEO for 17 years. And then Jagriti Enterprise Center was a product of that feeling कि हमें एक संस्थागत रूप से एक जगह रह के कुछ अच्छा करना है. तो 10 जिलों में हम काम कर रहे हैं. देवरिया में मेरा सौभाग्य है, उसी की वजह से शायद मुझे टिकट भी मिला, उसी की वजह से शायद मैं जीता भी हूँ. तो मैं और दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा काम करें तो politics is a viable medium to go further into life. Correct. And that goes without saying. आप काम कर रहे हैं तो लोग आपके काम को appreciate करते हैं. And you're so right. I mean, despite all the challenges your party faced in UP, you were one of the winners. That is amazing. पर मुझे ये बताइए कि ये जागृति यात्रा जो है, how has it evolved over 16 years? I've heard a lot about it, and one of these days I may be going to ask you to let me ride in the yatra for 16 days also, and come and talk to all the young people. You're most welcome. You're most welcome, and I think मैं तो उतना पूरा 15 दिन नहीं चल पाता हूँ, but I go for about 5, 7, 10 days. Since I become member of parliament, it's reduced a bit. Absolutely. But otherwise 10 दिन तो जाता ही था. So the evolution is as follows कि जब हमने इसका गठन किया 2008 में, तो हमारी ये सोच थी कि उसका रूट थोड़ा मैं बताता हूँ. जो चलती है मुंबई से दक्षिण जाती है, या तो कन्याकुमारी या हुबली, बैंगलोर. अदरवाइज कन्याकुमारी से मदुराई, बैंगलोर, श्रीहरिकोटा, देन वाइजैक, देन बहरामपुर, देन देवरिया. देवरिया एकमात्र जगह है जहाँ 500 लोग मेरे ही गांव में सोते हैं पिछले 17 साल से. और उसके बाद दिल्ली आते हैं, वहां से तिलोनिया, या इस बार हम लोग जयपुर गए, वहां से साबरमती जहाँ वैलिडिक्ट्री होता है, वापस. सो इट्स लाइक अ गार्लैंड ऑफ ट्रेन ट्रैक्स ऑन दिस कंट्री. नाउ द एवोल्यूशन हैज बीन दैट पहले हम सोचते थे कि जो लोग सीखते हैं वो बड़े बड़े लीडर से सीखते हैं. जैसे हम कई जगह जाते हैं, हर जगह एक लीडर से साक्षात्कार कराते हैं. बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है. हम किसी से ये नहीं बोलते हैं कि आप उनके बारे में पढ़ के आइए, आप उनको एक्सपीरियंस करिए. अरविंद आई केयर में डॉक्टर अरविंद हैं, जो कि उनके फाउंडर के नेफ्यू हैं, वो चला रहे हैं. तो उनके माध्यम से हम सीखें कैसे. अगर हम किसी और जगह जाएं, अक्षय पात्रा में देखें, या श्रीहरिकोटा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जाएं, वहाँ साइंटिस्ट से मिले, तो एक अनुभव से सीखें. एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाज वेरी क्रिटिकल. But what we realized is over the last 17 years, to answer your question, that the biggest learning is from each other. Because would you believe that last year
in 20 this last yatra which happened in the 15th of November to 1st December, there were 46,000 applicants, of which 8,000 were good applications, of which 500 got selected. तो जो टैलेंट पूल वहाँ का है, भारत के मध्यवर्गीय शहरों का, गाँव का है, मिडिल ऑफ डायमंड का है, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम सब में आया है कि सबसे बड़ा जो सत्संग से सीखने का होता है, हॉरिजॉन्टल लर्निंग है, कि कोई प्रेरणादायक है, कोई ग्राम प्रधान बन के आया है, नक्सलों से लड़ा है, वापस जाना चाहता है वहीं पर, या फिर कोई किसने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उनकी प्रेरणादायक स्टोरी जब सुनते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, और 15 दिन हम लोग लत्ते फत्ते एक ही ट्रेन में चले जाते हैं पूरे देश में, तो उससे बहुत प्रेरणादायक लर्निंग होती है। सो दैट्स व्हाट हैज चेंज मोस्ट। Amazing. So let's talk about the Jagriti Enterprise Center in Purvanchal. Um, Tell me a little bit about the center. What are the activities and how do you aim to bridge the rural-urban divide? Yeah. So this center is a very visionary center, and actually we never think small. We always say कि करना है तो बड़ा करना है, नहीं तो नहीं करना है. And a lot of people criticize this change, and this center also, which is one of the biggest centers, very big, like a white elephant, but it is a 6-acre center in a very ordinary village, my village as it happens, for Bantry. And we have districts around it, and we will soon have in the remaining 3 districts. So there's a 10 district footprint that we're creating. So 35 million लोग, मतलब 3.5 people. तो उसका जो केंद्र है, कि बिंदु है, एक बरगद के पेड़ के बगल में बना है, बहुत विशाल का बरगद का पेड़ है, 120 फुट की उसकी छाया है। मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आप अगर जेसी पे गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बड़ी छाया है। वो हमारी प्रेरणा स्रोत है, बिकॉज बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के नीचे बनिया ने ट्रेडिंग किया था, विश्वास का एक केंद्र है। बरगद को संस्कृत में विश्वास का चिन्ह मानते हैं, और उसके इर्द गिर्द हमने गोलाकार के आकार में इसको बनाया। नाउ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज करते क्या, उसमें बेसिकली 3I और 2E फ्रेमवर्क है। मैं संक्षेप में समझाता हूँ। 3I इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड इंस्पिरेशन, ये तीनों चीज करते हैं। क्योंकि इंक्यूबेशन हम करते हैं, जो कि काफी सालों से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो गया। इनोवेशन के 7 विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। One of them is women, digital, health, agro-processing, apparel handicraft, urbanization, and a bio-regional center, which is around environment. And then inspiration we do through the train journey through the Bargat. But the other 2 E's, which is environment, how do we make sure that we progress with environmentally sound processes, and also ecosystem. देखिए कई प्रोग्राम आते हैं, जब पैसा खत्म हो जाता है तो भाग जाते हैं वापस। हमने इकोसिस्टम बनाया। मैं उसी गांव में रहता हूँ, मेरी टीम वहीं पर रहती है, हम लोग वहां जम के रहेंगे अगले, हो सकता है भगवान कृपा हो, अगले 100 साल तक। तो लोगों में विश्वास आता है कि भाई ये इकोसिस्टम वाले हैं, ये प्रोग्राम वाले नहीं कि कुछ पैसा आया और जब पैसा खत्म हो गया तो भाग गए अपने बड़े बड़े शहरों में। So we are living amongst them. So this is the 3I and 2E framework by which we are operationalizing the center. So, Shashank, my next question is that given the aspirations of the youth in India, and this is almost identical in every part of our country, what role does technology play in supporting the initiatives of JECP? So technology is a critical role, maybe 3 or 4 aspects. One is that हमारा जो नेटवर्क क्लाउड बन गया है हमारे लोगों का, which is about 8,500 strong, उन connect कुछ ऐसी चीजों को so far away as it was perhaps 20 years back. Second is that we are using some enablement of the udyamis for making sure that they can be better udyamis. For instance, ONDC का प्लेटफॉर्म है, मार्केट एक्सेस उसे करवा रहे हैं, इनेबलमेंट करवा रहे हैं। तीसरा है कई बिजनेस मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए, जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ड्रोन से काफी महिलाएं वहां पर काम कर रही हैं। हम लोग ने इलेक्ट्रिकल साइकिल पे काफी काम किया है। डिजिटली भी एक कार्य करके कंपनी है, टेक शक्ति का बहुत बड़ा प्रोग्राम BMG ने किया है। और दिलचस्प बात ये थी कि कल मैं अपने संसदीय क्षेत्र में था और उस भाविश अग्रवाल आए थे, ओला के फाउंडर। उन्होंने कृत्रिम का बहुत बड़ा, आप जानते हैं कि इंडिक AI मॉडल बनाने की कोशिश कर रही। तो हमने एक संस्कृत की बैठक रखी कि संस्कृत से हम लोग कैसे AI को जोड़ें, so that we are able to produce our own Indic AI, which also harnesses our own ancient wisdom rather than just being fed what the West has said to us. So there are very manifestations of technology. Some are digital, but some are also more practical and tactical. Amazing, amazing. One more question relating to Jagriti, and then I want to come to your books. You know, so many people have passed through
the Jagriti Yatra, and I must have worked and been trained at JECP. Can you share a transformative story of an individual who has benefited so significantly that it's changed their life? So I find many of my yatris come up to me at odd places and say, "Sir, ये यात्रा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया।" Hmm. एक मैं गया अभी नीति आयोग कुछ समय पहले, एक बंदा आया, उसने मेरा पैर छुआ, उसने बोला, "सर, अगर आपका यात्रा नहीं होती तो मैं अभी कनाडा में होता, मैं कनाडा जाने के लिए तैयार था।" एक Hmm. और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दो लड़कियां थी, दे वर फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। Hmm. तो मैं हुबली में खाना खा रहा था इन लोगों के साथ, ट्रेन पहुंची, पहला स्टॉप था उस साल हुबली में। तो मेरे बगल में आके वो भी खाना खा रही थी, तो थोड़ी मायूस भी लग रही थी, थोड़ी सी एक्साइटेड भी लग रही थी। तो बोला, "क्या हुआ?" तो बोले, "सर, मैं समझती थी मेरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। मैंने इस औरत से साक्षात्कार किया जो थोड़ी सी 30 की थी। हम एक टाइम लाइफलाइन करते हैं पहले ही दिन, ताकि अपने-अपने टाइम लाइफलाइन बताएँ, अपने-अपने अनुभव बताएँ कि हमने Hmm. कितना क्या किया है।" तो Hmm. उसने बोला कि इस लेडी ने व्हेन शी वाज़ मैरिड इनटू हर हाउसहोल्ड, her husband and her mother-in-law never allowed her to go out. But what she did was, she said that I'm going out because I have to go to the doctors to get medical treatment. And in Hmm. the course of taking exit from the house, she created a 10,000 women SHG group. जब वो सक्सेसफुल हुई, तब जाके उसने उसको एस्टैब्लिश किया। और Hmm. उसके बाद एक बीच में जब उसको उसके प्रिस्क्रिप्शन भी लिया एक बार, ताकि उसको हस्बैंड को पता ना चले कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो शायद उसको अलाउ नहीं करता। तो Hmm. उसने बोला, हम समझते थे हमारी प्रॉब्लम है, इसकी इनकी तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, विद दोज एग्जिस्टेंशियल लॉर्ड्स दे आर क्रिएटिंग समथिंग सो ब्यूटीफुल। सो Hmm. दीज पर्सन टू पर्सन स्टोरीज इंस्पायर अ लॉट एंड ब्रिंग Hmm. ट्रांसफॉर्मेशन। Amazing, amazing. Thank you. So let's now talk for the next few minutes about two of your books, India: A Journey Through a Healing Civilization and Middle of Diamond India. Uh, how does the theme of healing civilization relate to the socio-economic challenges faced by contemporary India? So, firstly, the name has originated because V.S. Naipaul, who also comes from Purvanchal, of course, he went to West Indies, wrote a book called The Wounded Hmm. Civilization. And this was a riposte. My book was a riposte to say कि हम Okay. ऐसे wounded नहीं हैं. Hmm. And therefore, we believe we can not only heal ourselves, but we can heal the world. Hmm. And it's a very contextual question because हमने अपने ही क्षेत्र में प्रेरणा ली है कि प्रकृति को कैसे साथ लेके चले, और हमारी सिविलाइजेशन ने कभी प्रकृति पे प्रहार नहीं किया। वी नेवर अटैक नेचर, वी ऑलवेज फेल्ट नेचर वाज इन एट पैरिटी एंड समटाइम्स वी विल वर्शिप इट। जैसे मेरा बैनियन ट्री Hmm. 300 साल से खड़ा हुआ है, क्योंकि Hmm. महिलाएं उसके इर्द धागा बांधती हैं। तो वी Hmm. फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ humanity and nature coming together. So I think that we have many aspects, and this in itself can take a lot of time, how Hmm. we can heal through a new modernity, and I call it an Indian modernity, which announces that you are not supreme to nature, you're with nature. And secondly, we should also get away from the various divisions which colonialism created within us, so that as a humanity, we also converge for a Rashtriya cause, which the Prime Minister has talked about, Viksit Bharat. That is an amazing exemplar of that national effort and that national moment of transcendence. Transcendence means जात पात धर्म से परे हम लोग एक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें. So Hmm. this is where I think we can heal ourselves, and in so doing, I think we can also heal the world, which is going through a very tumultuous time. There's Correct. so many wars, there's so many other things which are happening, and I think India, which is an ancient civilization with an amazing continuity, can offer its own wisdom, which has been ignored. Great response. Thank you. And your other book, how does Middle of Diamond India emphasize the importance of participation and enterprise in India's Renaissance? So, firstly, middle of diamond is this metaphor that I've created, Hmm. which is in contrast to what Prahlad said, which is bottom of the pyramid. I think Hmm. bottom of the pyramid may have been relevant 20, 30 years back, but today, a large majority of our people are not very poor, nor are they very rich. They Yeah. are emerging middle class. I would Hmm. not conflate it with middle class, which is Yeah. at the bottom of the top and the on the top of the middle. Hmm. But this 800 million, which is about 10% of global humanity, is no longer दीनहीन। मतलब अब वो एकदम बोलते हैं कि दीनहीन आए। मैंने एक शब्द यूज किया अपनी किताब में, उसका है सॉफ्ट बिगेट्री ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस। हम लोग उनको समझते ही नहीं कि वो कुछ काम करने के लायक हैं। Hmm. तो अगर वो वैसे समझेंगे, उनको दीनहीन मांगेंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं आ पाएगा। तो जो Hmm. पार्टिसिपेशन और इंटरप्राइज की मैंने बात रखी है, कि हो सकता है 30 करोड़ या 40 करोड़ लोग जो कि बहुत गरीब हैं, उनको सेफ्टी नेट की जरूरत है, आवश्यक है, सरकार की जरूरत है।
हो सकता है जो ऊपर वाले हैं 20 करोड़ लोग, उनको ग्लोबलाइजेशन से मदद मिल गई है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। बट जो 80 करोड़ लोग हैं जिसको हमने उपेक्षित किया है, उनमें हनुमत शक्ति जगाने की बात की, जो श्लोक मैंने आपको पहले बताया। सो हाउ डू वी मेक देम पार्टिसिपेट रादर देन sit on the sidelines? And when you participate, many of the solutions become much more real because they're owned by the local population. And I can see it around the 10 districts and in my own संसदीय क्षेत्र। तो मैंने अपना पॉलिटिकल नारा भी रखा है, सबके प्रयास से सबका विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित है सबका प्रयास, मतलब कि 18.7 लाख वोटर, 19 लाख, which is about 1.9 million voters, if they just vote me into power, fine. But if they work with me for 5 years to take a country forward and my constituency forward, Right. then it's a different dynamic. That's what Absolutely. I'm trying to do. So that's what Abs- participation means. Absolutely. It's so well said. In your books, how do you balance historical perspective with actionable strategies for India's future? And one you just told me of how you want 1.9 million people to work along with you. So I think history does teach a lot, and I have always, while I am an IIT graduate, I have always been a history buff. मैंने इंडिया की हिस्ट्री कुछ हद तक, चीन की हिस्ट्री कुछ हद तक, यूएसए की हिस्ट्री काफ़ी अध्ययन किया, यूरोप में भी अध्ययन किया, बट यूरोप में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कई ऐसे नेशंस हमें बता सकते हैं उन्होंने क्या किया था। उदाहरण के तौर पे मेरा एक चैप्टर इंडिया एट 75 और यूएसए 75 को कंपेयर करता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया, यूएसए 75 ईयर्स के पहले उन्हीं रजवाड़ों से गवर्न हुआ था जो स्लेव ओनर्स थे, जैसे जेफरसन थे, चाहे वो वॉशिंगटन थे। तो चाहे वो चाहते भी वो स्लेवरी नहीं खत्म कर पाते। एक नया जनरेशन को उठना पड़ा, तब जाके स्लेवरी खत्म हुई, जब एंड्रू जैक्सन आए, उसके बाद अब्राहम लिंकन आए। मैंने समझता हूँ कि हमारे भी जो स्वतंत्रता के बाद कई ऐसी कॉलोनियल थिंकिंग है, औपनिवेशिक थिंकिंग है, जो हमारे मन मस्तिष्क में बसी रही। उस जनरेशन को हटना पड़ा, रिटायर करना पड़ा। भाई नई सोच आई जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि कोई भी साधारण व्यक्ति, वो भी साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें भी क्षमता है। पहले अगर आप सूट बूट नहीं पहनते हैं, अंग्रेजी नहीं झाड़ते हैं, तो आप ठीक नहीं है। अब यहाँ पर तो सब में एक आत्मशक्ति जग रही है। तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रांजिशन 75 के आसपास एक उदाहरण है उस हिस्टोरिकल कंपैरिजन का, जिससे हम लोग अपने आगे के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल गेट disappointed, disheartened by some of the tumult which is happening in India. And I say, hey, this is a normal process. And if you study history, many nations have gone through this tumult. One, the first generation retires and the next generation takes over. Interesting. So, time for two more questions for you. How do you see your role as an author influencing your work in politics and social development? So, first is that because I've researched a book which is 400 pages long and has got about 400 annotations, and मैंने annotation भी दबा के उसमें ठीक ठाक लिखा है, ये नहीं कि बस किताब उसके नीचे क्या उसका सारांश वो भी लिखा है, तो जो पढ़ेगा वो समझेगा मेरी बात। तो उसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी विषय पे आप मुझे बोलने के लिए बोलिए, तो मैं कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ। जैसे महिला के विषय पे मैं बोल सकता हूँ, अगर यूथ के विषय पे मुझे गणित मालूम है, उद्यमिता पे अगर मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, यूएस हिस्ट्री पे चैप्टर लिखा, तो एक तरह से जो यहाँ पर एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि बैरक ओबामा ने भी किताब लिखी और पॉलिटिक्स में आने के पहले मैंने भी लिखी, आप भी लिखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा रिसर्च हो जाता है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज उसका हिंदी का अनुवाद पेंगुइन ने किया है, तो उसका नाम है अमृतकाल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। वो काफी प्रचलित हो गई है और उसको मैंने ठीक ठाक तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में फैलाया है, और उससे मेरी राजनीति को बल मिला है, क्योंकि मेरे जो विचार हैं, जो कि सबके प्रयास के विचार हैं, थोड़े नए विचार हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा कहता है। तो ऐसे विचार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हैं, उन विचारों को ले जाने के लिए मैंने इसका प्रचार किया है। मैंने एक संगठन भी खड़ा किया है, बरगद अमृत संगठन, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र में जो मानव शक्ति है उसको उजागर करें। तो मेरे हिसाब से मेरी किताब ने मुझे एक तरह से एक बैकग्राउंड दिया है किसी चीज़ में अपनी बात रखने का, और दूसरा मेरी किताब के माध्यम से, खास करके हिंदी किताब के माध्यम से, लोग मुझे समझने लगे हैं। और जैसे आप जानते हैं उसमें मैंने कई अपने पर्सनल वृत्तांत भी दिए, उसको डीपर्सनलाइज नहीं किया है, थ्योरेटिकल नहीं बनाया। मैं जिस बड़ा हो रहा था, तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनका क्या प्रभाव मुझ पे पड़ा। मैं जब आईआईटी में था, मैं कॉल्विन तालुकदार कॉलेज में था, तो मैंने अपना भी एक तरह से जो हृदय की बात है उसमें रखी है अपने चरित्र से, लेकिन और लोगों की बात रखी है, कई उद्यमियों की बात रखी, कई यात्री की बात रखी है, और इसी के साथ साथ मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है उसमें, ताकि एक अच्छी किताब निकले, और अच्छी चल रही है। Amazing. And my last question for you. You know, a lot of professionals, like you were a professional in the corporate world, aspire to make, their own vanprasth in politics. You've already given one piece of advice, which is write a book. What are some other pieces of advice you could give to such individuals who want to uh, transition to public service?
So I would distinguish between being in politics and serving the public, Correct. because the two are related but not necessarily the same. Yeah. You can serve the public in many other ways. God forbid if I had not got the ticket and I had not won. मैं तो बोला था 25 साल में लगाऊंगा इसमें. 15 अगस्त 2022 को मैंने लाल किले की प्राचीर पे जाके प्रण लिया कि मैं 25 साल लगाऊंगा. तो मैं उसमें 2-3 सलाह दूंगा. उसमें आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक सर्विस भी कर सकते हैं अन्यथा. Right. और कुछ लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग देवरिया में आके इसका अध्ययन भी करिए. 2-3 चीज मैं बोलूंगा. एक तो आपके मन में एक भावना होनी चाहिए. Politics is too hard to do just because you want to get into power or do policy. The pressure of the population, which is so immense. When we got independence, we were 300 million people. How many parliamentarians? 545. When we are today, we are 1.43 billion people. How many parliamentarians? 545. That means the pressure has never been higher on a legislator in the history of our planet. कभी हिस्ट्री पर. तो आप इसमें इस तरह नहीं आए कि आप सुख का जीवन बिताएंगे, आपको पावर मिलेगा, लाल बत्ती मिलेगी. लाल बत्ती भी नहीं मिलती है, आपको साधारण गाड़ी में ट्रैवल करना पड़ता है. सो डोंट, बट इफ यू हैव अ पर्पस, मान लीजिए आप यू वांट टू प्रमोट women, you want to do something for sanitation, you want to do, so choose your path, choose your purpose first, number one. Number two, I would say assemble a team. बहुत महत्वपूर्ण है. मेरी टीम अगर नहीं होती तो 2 मिलियन पीपल को मैं कोप नहीं कर पाता. मेरी टीम अच्छी है. थर्ड इज चूज एन एरिया. एक ऐसा भौगोलिक, चाहे वो आपका बिल्डिंग सोसाइटी हो या आपका मेयर जहां पर आप हो सकते हैं, या विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई ऐसा क्षेत्र हो दैट यू कॉल योर ओन एंड वर्क ऑन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन फाइनली आई थिंक do it with the long-term aim of an ambition of Viksit Bharat in mind, because the whole country is now aligning slowly. I know the opposition sometimes pulls in opposite directions, but I think well-meaning people in the opposition also know कि हमारे बच्चों के लिए हमें काम करना है. और अंत में यही कहूंगा दोस्तों, आखिरी मौका है. 23 साल बाद जब हमारी 100वीं वर्षगांठ होगी तो हम लोग बूढ़े होने लगेंगे. जो चीन का हाल अभी हो रहा है तब हमारा हो जाएगा. तो आने वाली पुश्तें माफ नहीं करेंगी अगर हम लोग अभी से नहीं कमर कसी और दिन रात अपने लिए प्रयास नहीं किया. सो आई वुड इनवाइट यू टू take this challenge, this last challenge for India, because after 23 years, we will become demographically old and it'll be much more harder for us to progress. So I invite all of you to take a place and be in public service. Amazing. And on that note, and your incredible last piece of advice, this is our last chance, and the thousands of young people will listen to our conversation. We have to do something to be able to give back and make sure that the generations ahead will thank us. Thank you so much, Shashankji, for talking to me about your own incredible journey. We discussed a lot of amazing things about your journey. I think you gave us a lot of inputs about Jagriti Yatra, about the Jagriti Enterprise Center, about the young people, their aspirations, how you're using technology. And then also we talked about both your books. Thank you for speaking to me, and all the very best to you. Thank you very much, Ashutoshji. Really appreciate it. Thank you for listening to the Brand Called You videocast and podcast, a platform that brings you knowledge, experience, and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Just search for the Brand Called You.